ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह और अपने अपने घरों में मेरे लेक्चर्स को सुन रहे होंगे। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड related to group data. We discussed the computation of group mean and group standard deviation. The computation of group standard deviation we discussed with two different formulas. One is the standard formula and the other one is the computational formula. So our today's objective is to give you an idea about how to find out the median and mode for group data. So we start the first slide of median. Median, as we already discussed, bisect the data into two parts. So the median is actually called a measure of location. It gives us the central location of the data, and we already discussed a lot of interpretation regarding median. In today's lecture we discuss how to find out the median value for group data. Students, consider this formula for finding the median. Here L1 represents the lower limit of median class. Whenever you have a group data, you must first of all, the first task is to determine the median class. The median class is nothing but actually the median class give us the middle score. For example, here if you find this score n plus 1 by 2, where n represents sum of the frequencies. So if for example you have 40 scores or 40 items in your group data, the sum of frequency is 40, and 40 if you add plus 1 and then divide by 2, 41 divided by 2 would be 20.5. So you need to locate the 20.5. Where is the 20.5 actually lies? That class would be treated as median class, because the middle of the items, the middle of the frequencies actually lies under that class, and that class would be treated as median class. हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देंगे कि मीडियन क्लास को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इधर फॉर द टाइम बीइंग हम ये देख लेते हैं कि हाउ टू पुट अप दिस इंफॉर्मेशन इनटू द फार्मूला, और ये फार्मूले में L1 क्या चीज़ है, L2 क्या चीज़ है, L1, F1, F, M एंड C क्या चीज़ है, ये डिस्कस कर लेते हैं। As I said, L1 represent lower limit of the median class, L2 represent upper limit of the median class. So this means ये L1, L2 जो वो median class, जब भी median class determine होगा तो आपके पास L1, L2 by default आप इन दोनों values को आप find out कर लेंगे। F represent frequency of the median class. Again, median class अगर determine हो गया तो frequency of the median class determine करना कोई मुश्किल काम नहीं है। Then M है यहाँ पे M minus C. M represent middle item, और n plus 1 divided by 2, where n equals to number of items or sum of frequencies. C represent cumulative frequency preceding to median class. Students, इसमें अब आप समझ लें कि आपको जब भी मीडियन कैलकुलेट करना हो तो ये 5 इंफॉर्मेशन जो है वो आपको चाहिए होती है किसी भी डेटा ग्रुप डेटा में। तो लेट अस सी के ये 5 इंफॉर्मेशन किस तरह हम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द डेटा इज़ गिवन मीडियन मंथली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन रुपीज़ फ्रॉम द गिवन ग्रुप डेटा. We need to find the median. For example, the wages, monthly wages are 800 to 1000 rupees. The workers are 18. तो टोटल 143 वर्कर्स से 18 वर्कर ऐसे हैं जिनकी मंथली वेजेस 800 से 1000 के दरमियान है.
25 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी वेजेस जो है वो 1000 से 1200 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ द टास्क नंबर 1 इज़ टू डिटरमाइन मीडियन क्लास, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग द मीडियन क्लास, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन वी हैव? 143 एंड द फार्मूला सेट n+1/2. So 143 plus 1, 144, 144 by 2 means 144 by 2 means 72. Okay, 144 by 2 means 72. Now we need to locate this 72. Okay, for finding the median, one important task is to find out the cumulative frequency. As the data is given to us, as the data monthly wages and frequencies are given, the next task is to find out the cumulative frequency. The cumulative frequency, first cumulative frequency is actually the same, the frequency. For example, here 18, just write 18 as the first cumulative frequency. And for the next cumulative frequency, we just add up 18 and 25. The sum of 18 and 25 becomes 43. So 43 would be the next cumulative frequency. And for the third cumulative frequency, add all these three items, or simply 43 plus 30. 43 plus 30 becomes 73. 73 would be the next cumulative frequency. And then next is 107. How we get 107? Just add up 73 and 34. 73 and 34, 107. 107 plus 26, 133. 133 plus 10, 143. So in this fashion we calculate the cumulative frequencies. Now the next task, actually the cumulative frequency tells us the less than, it is actually the less than frequencies. For example, 18 workers wages, 18 worker wages is less than 1000. 43 workers wages is less than 1200. 73 workers wages is less than 1400. Similarly, 107 workers wages is less than 1600. मीन्स 1600 से लेके 800 तक इतनी वेजेस है 107 लोगों की. इसी तरह 133 वर्कर्स वेजेस इज लेस देन 1800. सिमिलरली 143 वर्कर्स वेजेस इज बिलो 2000. सो मीन इस तरीके से यू कैन इंटरप्रेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इट इज़ बेसिकली द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज़ कॉल्ड. Now the next task is to find out the median class. For median class, as I said, just find this number n+1/2 and represent total number of frequencies. The sum of these frequencies is 143. So 143 plus 1 divided by 2 becomes 72. Now find out how many what is the less than wages of 72 workers. For example, if I consider 18 is less than 72. So 72 जो है वो यहाँ 18 में नहीं आ सकता. 72 43 में भी 72 लोग नहीं आ सकते. बट यहाँ पे 72 since the cumulative is 73, इसका मतलब है 72 जो है वो कहाँ पे आएगा, इस क्लास के अंदर 72 आ जाएगा. यहाँ पे 43 तक है. मैक्सिमम कितने लोग हैं? 43. यहाँ मैक्सिमम कितने लोग हैं? 73 है. इसका मतलब है कि 72 वाला जो पर्सन है, दैट पर्सन विल बी अंडर दिस क्लास. सो इसका मतलब ये है कि मीडियन क्लास कौन सी है हमारी, ये वाली क्लास जो है वो इज ट्रीटेड एज मीडियन क्लास. देखें 107 जो है इसमें 72 तो इंक्लूड है, लेकिन 72 एक्चुअली ये इस क्लास में कितने लोग हैं? 73 से ऑनवर्ड लोग हैं. 72 इज इंक्लूडेड इन दिस. इस क्लास में 72 नहीं आ सकता बिकॉज इस क्लास में 18 के बाद 19 से लेके 43 तक लोग यहाँ पे हैं. 44 से 73 यहाँ पर है. दिस मीन 72 इज इंक्लूडेड इन दिस क्लास. सो दिस क्लास वुड बी ट्रीटेड एज मीडियन क्लास. सो अब मीडियन क्लास डिटरमाइन होने के बाद द नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L1 and L2. So now in my question, L1 represent 1200 and L2 represent 1400. So L1 is just write L1 instead of L1 right here 1200, L2 1400, L1 1200. Frequency of this median class is 30. So put it replace 30. And similarly
M represent n plus 1 by 2. Here my M is 72, so put here 72. Now C represent the cumulative frequency of preceding to median class. The preceding to median class cumulative frequency is 43. The median class cumulative is 73. Students, ज़्यादातर आप लोग जो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मीडियन क्लास की लेते हैं. नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी लेनी है, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास लेना है. सो 73 प्रीसीडिंग टू 70 मीडियन क्लास इज 43. सो consider 72 minus 43. 72 minus 43 becomes 29. 1400 minus 1200 becomes 200. इसको just simplify करें, you will got the final answer. The final answer for the median score is the final answer is 1393.3. Okay, so this is how we find out the median. Let us consider an example. I will give you hand-on practice. The example of median for cut point grouping, as I said, this type of grouping where under is written, it is called a cut point grouping. So for this type of grouping, for this type of cut point grouping data set, we need to find a median score. So let us consider this example in Excel. Okay, so whenever you have a data set, to find a median score, the first task is to find out the cumulative frequency. Okay, so the first cumulative frequency is same as the frequency. However, the next is the sum of preceding. 9 plus 3, 12. So now next would be 12. And then the next would be sum of previous preceding frequency, which is 12, plus the sum of current frequency. So 12 plus 14, 26. Okay, 12 plus 14, और सिंपली इन तीनों को ऐड कर लें. 14 plus 9 plus 3 becomes 26. या आप क्या करें, 12 plus 14 becomes 26. नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज 26 plus 7. 26 plus 7, ये 26 plus 7 it becomes 33. Then next क्या होगा, 33 plus 3 it becomes 36. Then 36 plus 0 again 36, 36 plus 0 again 36, 36 plus 1 becomes 37. So the last cumulative frequency must be the sum of total frequency. Sum of total frequency, which is in fact 37. So the last cumulative frequency must be the sum of total frequencies. Okay, now the next task in finding the median is you need to find n plus 1 by 2. N plus 1 by 2. So what is n plus 1 by 2? For example, in my case, n is 37 plus 1, which is 38, and 38 by 2, 38 by 2 becomes 19. Now I need to look for 19. 19 क्या इस क्लास में आ सकता है, ये 3 क्यूमुलेटिव नहीं आ सकता, इसमें आ सकता है 12 नहीं आ सकता, इसमें आ सकता है 19, यस, क्योंकि 26 है तो 19 जो है वो इसके अंदर आ सकता है. सो दिस मीन्स दिस क्लास वुड बी ट्रीटेड एज माय मीडियन क्लास. इज इट क्लियर? मीडियन क्लास कैसे करते हैं, दोबारा देखें. सबसे पहले आपने टोटल फ्रीक्वेंसीज को +1 करके 2 से डिवाइड किया, 38 आया. 38 को आपने डिवाइड बाई 2 किया, सॉरी टोटल फ्रीक्वेंसी 37 में +1 किया, 38 आया, उसको 2 से डिवाइड किया, 19 आया. नाउ यू नीड टू लुक फॉर 19 इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 19 पॉसिबल है? नो, बिकॉज फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कह रहा है कि सिर्फ 3 लोग मौजूद है जो कि अंडर 140 है, और इधर कह रहे हैं कि 12 लोग हैं जो कि अंडर 160 है. क्या 19 इसके अंदर है? नहीं है. इधर 26 है अंडर 180, इसका मतलब 19 जो पर्सन है दैट वुड आल्सो इंक्लूड इन दिस रेंज, क्योंकि यहाँ पे 13 से 26 तक लोग मौजूद है, 19 इंक्लूडेड इन दिस. देयरफॉर दिस क्लास वुड बी ट्रीटेड एज मीडियन क्लास.
मीडियन क्लास डिटरमाइन करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लोअर लिमिट L1, हमें चाहिए अपर लिमिट L2, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, हमें चाहिए M, हमें चाहिए C. Okay, now L1 represent lower limit. The lower limit of this median class is 160, so put it 160. Upper limit is 180, and frequency is 14. Frequency of the median class, it is 14, and M represent 19. M represent the middle score, which is 19, and C represent the cumulative frequency preceding to the median class. So here the preceding to median class is 12, so consider only 12. Now put all these information into the formula of median. So here we can find the median score. The formula of median is L1 plus L2 minus L1 over F, M minus C. So considering the formula, we can find easily the median score. The median score here is L1. The first part of the formula is put here L1. The L1 is 160, so 160 L1, and then L2 minus L1. L2 minus L1 means 180 minus 160, and then divide this difference by the frequency. The frequency is 14, and then multiply this figure with M minus C. Here M is 19 and C represent 12. So here we go. This is how we calculate the median score. Is it clear? Okay. 160 plus 180 minus 160 divided by 14 multiply by 19 minus 12. So here we just computed these values, put the equality sign, you will get the final answer. The final answer is median 170. So students, this is the way we find the median score for a group data. Okay. Now moving to the slide. So median for cut point grouping we have discussed. Similarly, another example we consider the median days to maturity for short-term investment grouped in the following distribution. The distribution is given days to maturity. The data is given for short-term investment, but the data is grouping in the form of limit grouping. Limit grouping में क्या होता है कि there is a gap between two classes. ये 39 पे ख़त्म हुआ और ये 40 में स्टार्ट हुआ. इसका मतलब है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन 39 एंड 40. फॉर एग्जांपल 30 एक का गैप है, वन डिफरेंस है. 49 to 50 एक का गैप है, 59 to 60 एक का गैप है. सो व्हेन एवर यू हैव अ गैप इन द डेटा एंड यू नीड टू फाइंड द मीडियन स्कोर. मीडियन स्कोर आपको फाइंड करना है, डेटा के अंदर गैप मौजूद है, तो आपको एक काम और करना है, दैट इज़ द क्लास बाउंड्री. ओके. So class boundary, you need to determine the class boundary. Class boundary actually is used for filling the gap. Okay. पिछले एग्जाम्पल में कट पॉइंट ग्रुपिंग में हमारे पास कट पॉइंट्स मौजूद होते हैं, तो इसमें गैप्स मौजूद नहीं होती. 160 पे अंडर 160, फिर 160 से स्टार्ट है, अंडर 180 से स्टार्ट है, सो देयर इज़ नो गैप. लेकिन लिमिट ग्रुपिंग में गैप्स मौजूद है. So we need to remove those gaps. So for example, एक का गैप है तो 0.5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट में और 0.5 ऐड करना है अपर लिमिट में, then you can remove the gap. For example here 29.5 से लेके अगर हम इसको 39.5 कर दें तो गैप रिमूव हो जाएगा. ठीक है. 29.5 यानी 0.5 सब्ट्रैक्ट किया आपने और 0.5 यहाँ ऐड किया तो 39.5 में हो गया. इसी तरह 40 में क्या करना है, हमें हमेशा लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है. इफ़ द गैप इज़ ऑफ 1, अगर ये गैप 2 यूनिट का हो तो फिर 0.5 के बजाय एक जो है ना वो सब्ट्रैक्ट होगा और एक ऐड होगा. अगर ये गैप जो है वो 0.5 यूनिट का हो
जैसे 1 का है तो 0.5, 2 का है तो 1, 0.5 का है तो 0.25 एड एंड सब्ट्रैक्ट होगा. सो इट डिपेंड्स. 0.5 इज नॉट द रूल ऑफ थंब. इट डिपेंड्स कि डिफरेंस कितने का है. जितने यूनिट का डिफरेंस है उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए. यू विल फाइंड द नंबर कि कितने नंबर से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, नाउ इन दिस केस 40 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 39.5 बन जाएगा और ये 49.5 बन जाएगा. तो आपका गैप जो देखें अल्टीमेटली देयर इज़ नो गैप. तो क्लास बाउंड्री में और क्लास इंटरवल में जो फ़र्क है वो यही है कि इसमें गैप मौजूद होता है लिमिट ग्रुपिंग में और इसमें गैप मौजूद नहीं होता. सिमिलरली 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5, 69.5 to 79.5, and then 79.5 to 89.5, then 89.5 to 99.5. ओके, सो एक काम तो हमने ये कर लिया कि गैप्स फिल कर लिए. Then the next task is to find out the cumulative frequency. Cumulative frequency क्या है कि फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम एज इट इज़ हम टाइप कर देंगे, लिख देंगे. जैसे फ्रीक्वेंसी 3 है तो फर्स्ट भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 होगा. नेक्स्ट में क्या होगा, हमें ऐड करना है 3 + 1 4, देन 4 + 8 12, देन 12 plus 10 becomes 22, 22 plus 7 29, 29 plus 7 36, 36 plus 4 40. और याद रखें the last cumulative frequency must be the sum of all frequencies. The last cumulative frequency is the sum of all frequency. The sum of frequency is 40. The last cumulative भी क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए. तो ये काम भी हो गया. Now the next task is to find out the median class. So for median class we need to determine n plus 1 by 2, n plus 1 by 2. Here n is 40, so 40 it becomes 41 by 2. 41 by 2 is 20.5. Now find out 20.5. फर्स्ट क्लास में 20.5 नहीं हो सकता, सेकंड में नहीं हो सकता, थर्ड में नहीं हो सकता, फोर्थ क्लास में 20.5 हो सकता है. सो दिस मीन्स दैट फोर्थ क्लास वुड बी माई मीडियन क्लास. सो मीडियन क्लास डिटरमाइन हो गया. नाउ मीडियन क्लास डिटरमिनेशन के बाद आई नीड टू फाइंड आउट L1 lower limit of median class, L2 upper limit of median class, frequency of the median class, M and C. ये 5 information हमें चाहिए. Now L1 क्या है हमारे पास 59.5, L2 क्या है 69.5, frequency क्या है 10. ओके, ये मीडियन क्लास की सारी चीज़ें लिख रहा हूँ. 59.5, 69.5, frequency हो गया 10, M हमारे पास है 20.5. And what about C? C is the cumulative frequency preceding to the median class, which is 12. Now put all these information into the formula. Median हमारे पास क्या आया, the lower limit 59.5 plus the difference is 69.5 minus 59.5, and this divided by the frequency which is 10, and then this multiplied by the M minus C. M is 20.5 minus C becomes 12. Now you can simplify this formula and the solution is 68. So the median score for the given data is what? 68. Okay, so this is how we find the median. Okay, here we go. Goodbye.